अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर, मेरा नाम है अली और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फ़ा इकबाल। और देखने जा रहे हैं डॉक्टर एस जयशंकर साहब के शॉर्ट वीडियोस। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। मिस्टर प्रेसिडेंट, एक्सेलेंसीज, distinguished members of the General Assembly, नमस्ते from भारत। पहले ही शॉर्ट। मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। Foreign Minister Jaishankar is a son of Subramaniam, who was a strategic affairs analyst, commentator, and civil servant. And hold on to your hats, because this guy has more degrees than a thermometer, MA in political science, M philosophy, and a PhD in international relations from JNU, where he practically majored in nuclear diplomacy. It's safe to say he's the foreign minister by day and a strategic superhero by night. आप लोगों की फॉरेन पॉलिसी का एक सबसे बड़ा सक्सेस क्या आप जानते हैं कि मीडिया का कोई भी कन्वर्सेशन, ऐसी कोई भी बातचीत आजकल पाकिस्तान के बिना पूरी हो जाती है। नहीं, देखिए ऐसा है, एक तो जो आपने कहा कि आजकल अगर पाकिस्तान की बात जो है कम हो रही है, तो इसको मैं क्या कहूँ, एक किस्म से यू कैन से इट इज अ वर्डिक्ट ऑफ द मार्केट। आई मीन लूजिंग स्टॉक में कौन बात करता है? हाय 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 हाय, बड़ी बात। इतना ही काफी। Can you really be neutral in a war for which obviously one side bears all responsibility? I think in international relations you have sometimes very complicated situations. Is this really complicated? There's Well, just one big country invading its neighbor. No, look, I can give you many instances of countries who have violated the sovereignty of another country. You know, if I were to ask where Europe stood on a lot of those, I'm afraid I'll get a long silence. जवाब सुनते हैं। India and Pakistan have been accusing each other about terrorism. Hina Rabbani, as you said, yesterday, she brought up this. Could you come to the question? My question is, how long South Asia is going to see this terrorism and disseminating from New Delhi, Kabul, and Pakistan? How long they are going to be at war? Number one, and then second, how about the UN Security Council resolutions on Kashmir? Does India abide by it or not? You're asking the wrong minister when you say how long will because it is the ministers of Pakistan who will tell you how long Pakistan intends to practice terrorism. In terrorism. At the end of the day, the world is not stupid, the world is not forgetful. This cabinet is very much a team cabinet. I had the choice of whether I would join a political party or not. I joined because I genuinely believe today that this is a party which captures the sentiments and interests and aspirations of India the best. तो पाकिस्तान का कुछ फ्यूचर है? बताएं। हम अगले सवाल पे जा सकते हैं? यार, अगला सवाल जनता से ले लेते हैं। फ्यूचर कोई नहीं भाई, कोई फ्यूचर नहीं, खत्म शुद्ध। हमने काफी तस्वीरें और वीडियोस देखे हैं पीओके से। वहाँ के लोग मोदी सरकार से ये डिमांड करते हैं कि उन्हें भारत में शामिल कर लिया जाए, तो क्या मोदी सरकार उनकी मदद करेंगे? करीब 30 साल पहले हमारे संसद ने तय किया था, और ये संसद का एक रेजोल्यूशन है इस पे, कि पीओके जो है ये भारत का बिल्कुल इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड इट विल ऑलवेज रिमेन सो। तो अभी जो है वो हमें एक किस्म से विरासत में ये प्रॉब्लम मिली है। इसीलिए पूछ रही कि क्या पाकिस्तान का नक्शा भी बदलेगा थोड़ा बहुत? नहीं, पीओके जो है ये पाकिस्तान के नक्शे में नहीं है, ये भारत के नक्शे में।
This Indian man is one of the most powerful and influential diplomats in the world, and some of the leaders are scared of him. Dr. S. Jaishankar is Minister of External Affairs of India, and with over 4 million followers on social media, he is no less than a celebrity. His clips frequently go viral over the internet for his epic comebacks and his ability to handle tough questions. But the question is, how did he become such an influential figure? Well, let me tell you his story. Dr. Subramaniam Jaishankar was born in New Delhi in the family of diplomats, and after completing his PhD from JNU, he joined the Indian Foreign Services in 1977. But his real wit and crisis management skills came into play in the two major historic events. The first, when he was appointed as a key member of an Indian team to negotiate the historic Indo-US nuclear deal. And the second, between 2009 and 2013, when the tensions between India and China were running so high that the Chinese army started putting their tents in the Indian territory of Ladakh. But because of his excellent crisis management skills, the Chinese army pulled back from their position. But in 2019, the history was made when Dr. Jaishankar became the first Minister of External Affairs who wasn't a politician, and no one saw that coming. And since his appointment, India's international position has strengthened as one of the most powerful countries in the world. Notable people around the world like former US Ambassador and even the former Prime Minister of Pakistan, Imran Khan, also praised this man. And that is Dr. S. Jaishankar for you. So what is your opinion about Dr. S. Jaishankar? Tell me in the comments. Let's talk about India's interests. India does not take part in Western sanctions against Russia, but has increased its imports from Russia 5 times since the war. Yes, idea. Are you not helping Moscow? Are you not financing Russia's war? You know, Europe imported in the same period 6 times the energy which India did. So if somebody Europe decreased its imports a lot and dramatically since there was not a new multiplier. No, essentially, if it is a matter of principle, why didn't Europe cut on the first day? Why did we see on 25th of February a complete cut-off of energy imports from Russia? Europe has managed to reduce its imports while doing it in a manner in which it is comfortable for Europe. Now, if at 60,000 euros or whatever is your per capita income, you are so caring about your population. I have a population at $2,000. I also need energy. I'm not in a position to pay high prices. I now give the floor to His Excellency Subramaniam Jaishankar, Minister of External Affairs of India. Mr. President, Excellencies, distinguished members of the General Assembly, Namaste. ये बहुत शॉर्ट वायरल हुआ नमस्ते फ्रॉम भारत. The Financial Times article pointed out, it said the number of cashless financial transactions in India last year were 90 billion. Do you know how many cashless transactions there were in America? 2.8 billion. Even China had 17.6 billion. This is today the new India. So now the latest issue on G20 is the invitation card which says Bharat and not India. Now that is the latest thing, that is G20 going to reposition India as Bharat and not India as India? No, India, that is Bharat. It is there in the constitution. Please, I would invite everybody to read. When you say Bharat, in a sense, a meaning and a understanding and a connotation that comes with it, and that is reflected in our constitution as well. We saw you doing the namaste to Bilawal Bhutto. Diplomacy is an art of detail in a way. There's a lot of nuance, body language, how you dress, what you say, how you look, how you hold your hands or don't hold your hands. It depends on the person, it depends on the situation, it depends national relationship. Yes, that also, you use that occasion to do the signal. There are times and occasions, I wouldn't say there's a single formula. I tell people, look, if you really like doing something, you be very good at it. The problem with most of us is we end up doing things which are not necessarily what we want to do, what we're told to do. Well, circumstances make it. Okay. Diplomacy, international relations, good ties, friendship are not about giving other people a say in your choice. Our choice must be our choice. However difficult it is, that when it came to our energy purchases, our national choices and national interests were supposed to be subservient to the political correctness of
other countries who, by the way, had made their own arrangements to soften the blow for themselves. We have a relationship with Russia. It's not a relationship which happened in one instant, one day, 1 month, 1 year. It is an accumulated relationship of close to 60 years. And it's a relationship which happened because the direction of world politics during those 50, 60 years actually helped forge that relationship. So, because often I see the problem defined in a way as though somewhere there's some handicap that India has by having this relationship. This relationship has saved us at times. नमस्ते। कोई आग भी जल रही है। Mr. President, Excellencies, distinguished members of the General Assembly, Namaste from Bharat. Powerful people make less powerful. That we were one of the poorest nations of the world. But in the 75th year of its independence, India stands before you proudly as the fifth biggest economy of the world and still rising. I went when they opened up travel to America in 2021 and my son lives in America, and I asked him saying, we were going to a restaurant and they wanted to see our COVID certificate, vaccine certificate. So I showed them my phone. My son from his wallet produced a paper which was folded in a thing and said, okay, this is my certificate. And I looked at his paper and I asked myself, okay, this is where they are and this is... The whole idea of the COVID platform that each one of you like me got on your phone that you go to this place on this date and you get this done. Now you must understand, this is not the case with much of the world. Which tried to estimate how much the British took out of India in value terms. And a very calculated math ended up with a number of $45 trillion at Look at my eyes, tell me you're tired, do you see the road I'm meant to follow, tell me the size. हमारे एक पड़ोसी हैं जो माने किस्म से जैसे हम आईटी के एक्सपर्ट हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, वो इंटरनेशनल टेररिस्ट के एक्सपर्ट। बात ही खत्म कर। जयशंकर साहब हो गए, चाहे हरदीप सिंह पुरी हो गए, उनसे इतना यूरोप वाले पूछे थे कि आप पेट्रोल काहे रसिया से खरीद रहे हैं। जयशंकर साहब ने भी कहा, हम अपने कंपनियों को कहते हैं कि आप पेट्रोलियम खरीद के लाइए, चाहे जहां से लाइए, जहां से सस्ता मिले, जो बवाल होगा हम देखेंगे। इन लोग को समझ में आ रहा है मोदी है मोदी। समझ में नहीं आ गया? एक बार चश्मा उतार के जिनको देख लेते हैं ना। यार बेस्ट शॉर्ट वीडियो थे, लेकिन एक जो शॉर्ट है ना वो सबसे ज़्यादा वायरल होने वाला है जब उन्होंने बोला था नमस्ते फ्रॉम भारत, ये वाला शॉट है। और एक ऊपर से तब आग लगी थी जब एक G20 समिट हुआ था ना, तब बिल्कुल ही एक पीएम मोदी जी के आगे भी भारत लिखा हुआ रखा था उन्होंने कि एक भारत ही सब जगह चलेगा, क्योंकि इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन खैर उसको दबा दिया गया, लेकिन भारत सबसे आगे है। और एक डॉक्टर एस जयशंकर साहब पर आए तो एक उनके जो एक हाजिर दिमाग है ना कि मतलब वो एक ऐसा जवाब देते हैं कि एक एंकर जो एक क्वेश्चन पूछने वाला है ना वो भी बेचारा सोचता है कि मैं किन से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ किन से नहीं पूछ रहा है, एक कैसे हाजिर दिमाग से जवाब देते हैं, ये उनकी भी काफ़ी अच्छी एक चीज़ है। अच्छा देख लो यार, एक टाइम था ये अभी थोड़ा सा पहले 1 साल आ जाए ना, तो हमारे जो पाकिस्तान के लोग थे ना एंकर, जो मतलब एक लिफाफा एंकर थे हैं, वो कंपैरिजन करते थे एस जयशंकर का और बिलावल का है। वो यकीन करो हमें जो है ना वो हम सुन के पागल होने को दिल करता था कि यार ये किस तरह ये लोग कर लेते हैं। देख लो कि वो कहाँ पे उनका एक एक्सपीरियंस देख लो कि यो मतलब वो ना ख़त्म होने वाली उनकी स्टोरी हैं। और इधर देख लो वो जो है ना वो मतलब माता की डेथ के बाद भी पार्टी उसके हवाले कर दी गई, चलो भी वो चेयरमैन हो गया, उसके बाद उसको
वो डिप्लोमेट बन गया एक बड़ा। हाँ जी, अफेयर के ऊपर लगा दिया वो कभी कहीं तो उसको तो अभी तक नहीं पता मैं लड़की हूँ कि लड़का फॉरेन मिनिस्टर का बनना है। उसकी क्या बात करें। लेकिन अब एक पूरे वर्ल्ड में घूम कर देख ले कि जो भी डेवलपमेंट होता है ना भाई, उसका एक एक्सपीरियंस होता है कि मतलब कि उसको उसने एक चीज़ें पढ़ी होती है कि कैसे एक रिलेशन मतलब के बाल करने कंट्रियों के साथ, कैसे जाकर आगे एक कंट्री का नाम रखना होता है। उनका एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है भाई, ऐसे नहीं है। लेकिन इधर हमारे देश की बात करें, इधर तो भाई पता नहीं कहाँ से कहाँ है, इनको पता नहीं होता डेवलपमेंट का। लेकिन भाई आप डॉक्टर एस जयशंकर पर आ जाएं तो उन्होंने भाई एक शुरू से देख लो उनका कितना एक्सपीरियंस है। उनकी पूरी फैमिली इसमें रही है और इतना उनका बड़ा एक्सपीरियंस है। और एक पता चलता है, अब देखो ना, एक अमेरिका में जाकर एक थोड़ी सी स्पीच देना या यूएनए में जाकर एक अपनी कंट्री को आगे रख कर, तो वो कोई छोटा मोटा काम नहीं होता। और स्पीच भी भाई ऐसे देते हैं जैसे देने वाली होती है, पता नहीं चलता कि भाई एक प्राइम मिनिस्टर है या डिप्लोमेट है। हाँ बिल्कुल। अब देख लो ना, उनसे जो सवाल हुआ था ना कि आप पाकिस्तान के बारे में क्या कहना चाहते हैं, जिसके ऊपर जब उन्होंने कहा था कि एक स्टॉक मार्केट जो है ना जब गिर रही है, जिसका जो है ना वो नामो निशान ही नहीं है, तो उसके ऊपर बात करने का भी कोई फायदा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने कह दिया। तो देखो ना, ये एक रियलिटी के ऊपर है, क्योंकि एक टाइम था, आप देख लो ना कि थोड़ा सा पीछे जाए, पाकिस्तान ने जो एक मतलब हम खुद एक पाकिस्तानी है, लेकिन ये कि बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज जो है ना वो एक अवामी लिहाज से देखा जाए तो जो मतलब हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं थी। अब देख लो कि जिस तरह हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा टैग लगा एक टेररिज्म का, जिसको हम जो है ना वो हमें नहीं लगता कि कोई ऐसा सीन आएगा या कोई ऐसा टाइम आएगा कि वो हम अपने ऊपर से हटा सकेंगे, क्योंकि अभी तक भी हम जो है ना उसको से जो है ना वो फेस कर रहे हैं। क्योंकि बहुत हद तक हमारी गवर्नमेंट जो है ना वो कहती है हमने इसके अगेंस्ट काम भी किया है और हम जो है ना वो इस चीज़ को ख़त्म भी कर रहे हैं, हर तरह से कोशिशें भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी साइड के ऊपर देखो तो वो भाई ख़त्म होने का नाम भी नहीं लेते। तो ये चीज़ें हैं जिस वजह से जो है ना वो हम दिन ब दिन जो है ना वो एक ऐसे रास्ते की तरफ निकले हुए हैं कि जिसकी वजह से जो है ना वो आप कोई आप देख लो कि इंडिया में एक ज़रूर एक नाम चलता था, जिस तरह मतलब एक चाहे एक एनमी के तौर पे अगर देखा जाए, लेकिन अब ये कि लोग वो भी अब आस्ता आस्ता अपना जो है ना वो इंटरेस्ट जो है ना वो एक जो है ना वो यही कह रहे हैं कि हमें कोई दिलचस्पी नहीं इस चीज़ में, क्योंकि उनका एक और लक्ष्य है, वो एक और तरीके से जो है ना वो निकल गए। लेकिन कि हम अनफॉर्चुनेटली उसी पॉइंट की तरफ है कि हम दिन ब दिन जो है ना वो नीचे की तरफ ही जा रहे हैं, जिस वजह से लोग आप जो है ना वो नाम सुनना भी पसंद नहीं करते हमारा। नहीं, ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग काम हुआ था जब एक G20 भाई हुई थी ना, एक मतलब के समिट हुआ था, तब एक और चीज़ें शाया हुआ थी, क्योंकि यूरोप का फुल प्रेशर था कि एक मतलब के इंडिया को दबाव में लाकर हम उधर एक मतलब के रशिया की निंदा करेंगे और वो काफ़ी उधर मज़ा आएगा कि जो बाइडन भी बैठा होगा और इधर भाई पीएम मोदी एक बोलेंगे कि भाई एक रशिया ने बहुत बुरा किया, ऐसा नहीं रशिया को करना चाहिए, लिहाजा ये चीज़ें रुक जाएं। लेकिन उसके यार पता नहीं उस दिन से क्या उनको जो बाइडन और उनको पूरे यूरोप को आग लगी, वो इन्होंने भाई एक इंडिया के मतलब के पीछे वो एक दाग लगा दिया कि वो एक निज्जर वाला मामला, तो वो एक पड़ गया। फिर वो एक कनाडा और इनके रिलेशन थोड़े से भाई नीच ऊपर हुए, तो वो आग इनको यही थी कि यार ये तो हमने स्टैंड इन्होंने हो गए अपने आप पैरों पर, अब ये किसी के मुताज नहीं रहे अब। और जब इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था ना कि एक आपकी प्रॉब्लम के दूसरे के पूरे यूरोप की नहीं प्रॉब्लम है, आप उन्होंने बोला है आप एक इतने कमा रहे हैं, हमारे जो है सिर्फ $2,000 हैं पर कैपिटा, तो आपके 60,000 हैं, आपकी एक प्रॉब्लम है, आप अपने लोगों को सही लेकर चल रहे हैं, उनकी केयर कर रहे हैं, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना। नहीं, उन्होंने ये बोला था कि जो आपकी प्रॉब्लम है ना वो आप ये ना समझे कि पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है कि आपके साथ हम मैनेज होकर चले, अपनी प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व करें, हमें इसमें ना भी आया था। और जब हमारी प्रॉब्लम आती है आप एक मतलब के आगे पीठ दिखाकर आप भाग जाते हैं, ऐसा उन्होंने बोला था। बहुत इनको लताड़ा गोरों को यकीन करें। इमरान खान साहब ने भी एक तारीफ की थी कि उनसे कोई सीखो, कैसे रगड़ते हैं, कैसे बोला जाता है वेस्टर्न ममालिक जो है। बिल्कुल, बाकी अच्छे शार्ट्स थे, उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद आएंगे। अगर पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।